Alright, now I can share my screen, and as you can see, is it visible now, my screen? Hopefully yes. Please confirm. Can you see my screen? Yes, sir. Okay, thank you. So let us open that Google Sheet application. It is a Google app, so we can get that on Google App Drawer. Here, Google Apps, and scroll down, and you can see Sheets. This is Google Sheets, and this is something similar to your Microsoft Excel and other LibreOffice Excel. इस तरह के जो एप्लीकेशन है सिमिलर है, बट दिस इज गूगल के प्रोवाइडेड है, तो मैं यहाँ से काम करूँगा आज. आई मीन इसके बारे में बताऊँगा आपको. सो लेट अस ओपन दिस, और यू कैन ओपन इट फ्रॉम हियर, अदरवाइज आप यहाँ पे टाइप करके भी ओपन कर सकते हैं. sheets.google.com, and it will take you to the home page of Google Sheets. Welcome to Google Sheets. Quickly create new spreadsheets and open existing ones. Share with others to edit together. We can take a tour. Let us take a tour, and we can see no spreadsheets yet. So it's basically when you will open this Google Sheets for the first time, it will show you a walkthrough tour. As you can see here, start a new blank spreadsheet, or choose a template to help you get started. You can invite others to view, comment on, or edit the spreadsheet with you at any time. So just next, and again you can find your spreadsheets by using the file picker to browse any folders that you have set up in Google Drive. Next, you can search any of your Google Sheets, any folder, any spreadsheets that you have created, and any that have been shared with you, like if you have any files shared by your friends or someone else, right here in the search box. Okay, next, here is a menu button. This is the menu button on the left to switch to your documents in Docs, your presentations in Slides, or all your files in Drive. You can also find settings, help, and submit feedback here. If you are a Chrome user, make sure that you have installed the Office editor editing for Docs, Sheets, and Slides extension. तो कुछ एप्लीकेशन है इसका डेस्कटॉप के लिए. आई एम जस्ट skipping because I'll show you the process using browser only. Okay, now let's, okay, got it, continue. तो जब आप फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे इसे, तो इस तरह का आपको एक यूज़र इंटरफेस दिखेगा. एंड नाउ वी कैन सी हियर अ ब्लैंक, सेम एज गूगल डॉक्स में भी इसी तरह का यूआई था, एंड यहाँ पे भी सेम उसी तरह का दिख रहा है. कुछ टेम्पलेट्स है रेडीमेड, ऑलरेडी मेड, जो एक कैलेंडर दिख रहा है, एक इन्वेस्टमेंट ग्राफ है शायद, मंथली बजट एंड एनुअल बजट, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं. तो दीज आर टेम्पलेट्स ऑलरेडी रेडीमेड, यू कैन यूज़ देम टू, मतलब आपको फिर स्क्रैच से बनाना नहीं पड़ेगा. तो हम स्क्रैच से बनाएंगे. लेट अस स्टार्ट. जब आप मेनू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ मतलब दूसरे जो ऐप्स है, जैसे कि यहाँ पे बताया कि आप डॉक्स से या फिर स्लाइड से, फॉर्म से आप सीधे यहाँ पे अपने डेटा को ला सकते हैं, तो यहाँ से ले आ सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग अ गूगल शीट फ्रॉम स्क्रैच. सो to create any Google Sheets, you have to click on this blank button, or you can take any of the templates from any of these. So let's create from blank page and click on this. Okay, so we are on the Google Sheet page, and I'm dismissing this, dismiss.
ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ जो ये वाला ऊपर का जो सेक्शन है कुछ सिमिलर टू गूगल डॉक्स, सेम उसी की तरह है कुछ, है ना। ओके, तो लेट्स ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि सीट्स का लोगो है, सीट्स होम। यहाँ पे क्लिक करने के करेंगे तो आपको ये सीधा होम पेज पे ले जाएगा। सो आई एम नॉट गोइंग टू क्लिक ऑन दैट। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फाइल। यहाँ पे ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ पे अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट है जो कि रीनेम के लिए है। आप इसे अपने स्प्रेडशीट का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे माई स्प्रेडशीट एंटर्ड एंड it is saved with the name my spreadsheet. Last edit was seconds ago. Okay, now go to file and click here. You'll see some of options similar to Google Docs. जैसे कि मैंने बताया था न्यू, आपको न्यू क्रिएट करना हो तो, टेम्पलेट से लाना हो तो, एज सोन इन द गूगल डॉक्स ऑल्सो सेम उसी की तरह है। ओपन करना हो तो ओपन, इम्पोर्ट करना हो कहीं से, अगर दूसरे फाइल लाना हो लाइक ये हो सकता है गूगल डॉक्स से ला रहे आप तो यहाँ पे इम्पोर्ट करना हो, या फिर मेक ए कॉपी, इस फाइल का कॉपी करना हो तो मेक ए कॉपी। शेयर सेम एज गूगल डॉक्स, शेयर पे जाएंगे एंड यहाँ पे एंटर ईमेल एंड यू कैन ऑल्सो पब्लिकली शेयर योर फाइल विथ एनीवन विद द लिंक, तो इस तरह से शेयर कर पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव ईमेल, सेम email this file to someone with this message, with this subject, send yourself a copy. You can send yourself a copy also of the file that you have sent to check to make sure that you send the correct file. कई बार होता है कुछ फाइल्स हम सेंड करते हैं क्लाइंट्स को या फिर किसी को भी, तो हम खुद को भी बीसीसी में रखते हैं खुद का ईमेल एड्रेस, ताकि हमें भी पता चले क्या पहुंचा है उसके पास। ओके, देन डाउनलोड, आप इससे एक्सेल जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसे बनाने के बाद ओडीएस फॉर्मेट जो होता है ओपन डॉक्यूमेंट, ये आई थिंक लिनक्स पे चलता है लिब्रा ऑफिस में। एंड देन पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं आप, वेब पेज बना सकते हैं एंड कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ जो कि सीएसवी, एंड सीएसवी आपके फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट में भी यूज़ होता है सीएसवी। अक्सर आपने देखा होगा जब कॉन्टैक्ट्स आप अगर किसी भी कॉन्टैक्ट्स को VCF या CSV फाइल में कन्वर्ट करके अपलोड करेंगे ड्राइव में, एंड देन आपको जब वहाँ पे जैसा मैंने कल दिखाया था किसी भी फाइल को ओपन करना पड़ता है तो वहाँ पे दिख जाता है, लेकिन CSV एंड VCF फाइल ऑटोमेटिक ओपन नहीं होगा। उसके लिए आपको राइट क्लिक करके ओपन विथ ऐप में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से गूगल शीट चूज़ करना पड़ेगा, फिर वो VCF फाइल ओपन हो जाएगा। तो CSV फाइल इज़ कॉमा सेपरेटेड फाइल्स, वहाँ पे क्या होता है सिंपली एक टाइटल नेम होता है, फिर नंबर होता है, फिर एड्रेस होता है, फिर एड्रेस दिया होता है। इस तरह से कॉमा सेपरेटेड फाइल्स जो भी फाइल्स है उस फाइल फॉर्मेट में भी इसे सेव कर सकते हैं। देन टैब सेपरेटेड फाइल्स। ओके, नाउ वी हैव रीनेम ऑप्शन, सेम दिस ऑल आर सेम, वर्जन हिस्टोरी भी है एंड अदर डिटेल्स एंड सेटिंग्स एंड प्रिंट तो सेम। एडिट में कॉपी पेस्ट स्पेशल कुछ है। आई एम सॉरी, आई एम म्यूटिंग माई माइक फॉर फ्यू सेकेंड्स। ऑल राइट, सो सेम है, कुछ यहाँ पे अलग नहीं है। डिलीट एंड दिस ऑल आर सेम। इंसर्ट व्यू पे आप शो कर सकते हैं फार्मूला बार, ग्रिड लाइंस, फार्मूलाज एट्सेट्रा। फ्रीज कर सकते हैं अगर किसी रोज़ या कॉलम्स पे आप चेंजेस नहीं करना चाहते,
लाइक अनऑथोराइज चेंजेस जो होता है आपके मर्जी के बगैर गलती से हो गया, वो चेंज नहीं होगा अगर आप फ्रीज कर देंगे तो. देन यू कैन ग्रुप नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज, जूम इन, फुल स्क्रीन एक्सेट्रा. इंसर्ट पे आप सेल इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट सेल्स टू राइट, शिफ्ट लेफ्ट एक्सेट्रा. इंसर्ट कॉलम्स भी है, रोज भी है यहाँ पे. एंड देन सीट इंसर्ट कर सकते हैं. चार्ट, pivot टेबल, पाइवोट टेबल, इमेजेस एंड ड्राइंग, फंक्शन, लिंक, सारी चीज़ें यहाँ पे भी है गूगल डॉक्स की तरह ही. थीम्स ऐड कर सकते हैं, आपके ये जो बैकग्राउंड है वो वाइट है, आप थीम ऐड कर सकते हैं उसमें. नंबर, किस तरह के फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, नंबर, टेक्स्ट, अलाइनमेंट, रैपिंग, रोटेशन, ऑल ऑफ आर हियर. कंडीशनल फॉर्मेटिंग, किस तरह के डेटा आप किसी फील्ड में या फिर किसी कॉलम में देना चाहते हैं. ऑल्टरनेटिंग कलर्स, क्लियर फॉर्मेटिंग. डेटा, sort sheet, create a filter views, add slicer, protect sheets and ranges. This is a really useful tools. You can protect a number in a range of sheets or columns from any unauthorized changes. Then named ranges, named functions, column stats, data validation, data cleanup. बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन आपको इतने सब सारी चीज़ों का ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक थिंग. ओके, तो सीट में हम क्या करते हैं, ज़्यादातर ये यूज़ होता है आपके इंफॉर्मेशन किसी कंपनी में है आप, तो सपोज यू आर ओनर ऑफ ए कंपनी, एन ओनर ऑफ ए कंपनी और a recruiter. Then what is the job of a recruiter? They recruit new employee and they take care of their information details and other salaries, कितना मिलता है, उसका काम क्या है, ये सब चीज़ें जो मेंटेन करते हैं. सपोज यू आर वन ऑफ दोज. ओके, तो आप क्या करते हैं, आपको डेटाबेस होता है कंपनी का. एंड अदरवाइज जब इतना बड़ा सपोज इतना बड़ा कंपनी नहीं है, इट्स ए स्टार्टअप सपोज, एंड वी हैव टू यूज़ अ सीट. तो हम क्या करते हैं, उसमें सीट बनाते एंड वी राइट देयर नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ज्वाइनिंग डेट, सैलरी, डिपार्टमेंट एंड सिटी, कंट्री, पिन नंबर एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें हम रखते हैं लिख के. तो पहले ज़माने में होता था कि हम लिख के रखते थे, एंड नाउ वी कैन यूज़ दिस टाइप ऑफ थिंग्स टू store these datas in digital devices and we can easily get access to them anytime from anywhere. तो इसका एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम ये सब यूज़ करते हैं. लाइक गूगल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया एंड स्प्रेडशीट हो गया, और भी बहुत कुछ बहुत सारे इस तरह के ऑल्टरनेटिव एप्स भी हैं. तो आई एम गोइंग टू यूज़ गूगल शीट्स. ऑल राइट, सो एज यू कैन सी, अगर आपको एक्सपीरियंस है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो सेम है, थोड़ा उतना ज़्यादा अलग नहीं है. अदरवाइज लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट वी कैन सी दिस ए, दिस ए बी सी आप देख सकते हैं, डी ई एफ, ये जेड पर जेड तक है शायद, यस, टिल जेड. तो ये सारे जो चीज़ें यहाँ से वर्टिकली जो ये, इसे कॉलम कहते हैं, कॉलम. दीज आर कॉलम्स and these are rows, horizontal. These lines are rows and these are columns. Okay, and we can see columns are named with A, B, C, D, E, F, and rows are 1 to till infinite number. You can add as much as you need. We can add, so by default it is 1000, but we can add range of numbers like 1 million, but it will take a lot of resources to handle this whole data. तो उतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए हमें to make it easy to access. like जब बहुत सारा information and data यहाँ पे होगा तो access करना भी बहुत time consuming and आपके जो system है उससे slow कर देगा. तो it is recommended that you use इसका कोई लिमिट भी नहीं है उस तरह का, बट इतना ज़्यादा होता भी नहीं. एनीवे, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग. ओके, तो जिस तरह से आपको बताया मैंने, ये कॉलम है, ये सारे चीज़ें.
एंड रोज, तो हम टेबल बनाएंगे किसी तरह का, लाइक किसी एम्प्लॉय का हो, किसी कंपनी का एम्प्लॉय डिटेल्स. So let us create a heading of that list. So we are going to add a list of employees with their details and information. So let us create a heading. We can create a heading. uh, so employee details. Okay, so this is our heading. We can increase this area. See, a box, a cell, we can increase their weight and the height. तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक लाइन दिख रहा है आपको, इसे इस तरह से स्ट्रेच कीजिए एंड सी द पैडिंग इज इंक्रीज्ड एंड वी कैन इंक्रीज इट एज मच एज आई नीड. इस तरह से, सी दिस इज अ सिंगल कॉलम नाउ. तो इस तरह से हम इसे इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू कीप इट इंक्रीज्ड, let's keep it by default. Okay, now what I can do more is I want this heading to be in the middle of 3 or 4 column. Suppose for example A B C D column, and I want this heading in the middle, so we can merge 2 or 3 or 4 or as many as cells or column needed. We can merge them all together by selecting them first. Select this way और select any of the cells. इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, and you can select as many as you need. So selecting this line, this one row, let's take 2 rows and 4 columns and selected all, and we can go to format and we can go to state merge cells and merge all. To merge them all, see, all are now a single box, and you can see the employee details in the first right side, and we can make this on the middle of this box by formatting the text. Go here and center. See, this is on the center now, and you can customize the text more by using these buttons like bold, italic, strike through. Color of the text you can change to blue and untick it. Okay, now we can increase the size also by increasing the number. Here 36, this is a large number size. Okay, 24 is enough. And here in the color box, fill color, we can add a background color of this cell. So click here and add a background color. See, a background color is added. We have more option like borders, and then merge cells, to center, to vertical align, to text wrapping and text rotation, link, etc. So we have added we have added a heading, yes, and we have merged 4 cells together. 4 cells, no, 4 cells, not 4 cells, it's 8 cells together with 4 columns and 2 rows. Alright, now we can stretch it to make the length of these cells bigger. Okay, so that name and email address जगह मिल जाए इनके लिए, पूरा दिखे यहाँ पे. इस तरह से मैंने स्पेस ज़्यादा कर दिया. Okay, now we have to add a title of each columns, like name हो गया, date of joining हो गया, and date of birth, date of joining, salary हो गया, department हो गया. और भी कुछ ऐड करना तो और भी कुछ ऐड कर सकते हैं हम. So let us add more rows and more columns. So I have to do that again, like फिर से टाइटल बनाना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे नेम लिखेंगे, name, date of joining, so we have 4 column fields, but we need to add more information because to
target this person, we need more information, because salary and department and date of birth joining is not enough to figure out that person or know about that person. Okay, so we need more information, like his location, address, or his name is here, but we need phone number, email address, etc. So we can add more columns, like phone number, email and एड्रेस. ओके, तो इस तरह से करेंगे तो ये कुछ और लग रहा है, लाइक ये 3 कॉलम खाली रह गया. सो वी कैन मर्ज देम टुगेदर बाय सिलेक्टिंग सेम as it was. This is a single cell because we have merged them all together, and now we can select them from here, and यहाँ से ये selected हो गया, and we can merge them again. Format, merge all, and see the text is on the middle because we have aligned them to middle. And now we have titled here, like name, date of joining, salary, department, phone number, email and address. Okay, increase the size again. So we can add a background to this row also, to make it more visible and like पता होना चाहिए क्या है ये. Let's add a background like blue and change the text color to white and make the text bold. Alright, we can also increase the font size to 11. We can type 11, we can type 12. So increase it to 12, not that. Okay, so each of the column have now a title, name, date of joining, etc. Okay, so now we can insert data into it. Suppose a name of an employee is John week. Okay, and date of joining is 20 of September. And salary is 35 US dollar. यहाँ पे salary per annum. And department is information technology. This is not a proper department name, but just take it as an example. Phone number can be anything, an email address can be anything, an address is 123, address line, address, country. So we have added a sample data of an employee whose joining date is 20 of September and 9 month, which is and in the year of 2022, and his salary is 35,000 US dollar. Department is information technology, phone number is this. तो इस तरह से आप सिंपली किसी का भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, चाहे वो एम्प्लॉय हो, आपका क्लाइंट्स हो, कस्टमर हो, to keep track of them, to keep details and information about them. Okay, तो इस तरह से आपको खाते में लिखने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगा. Alright, now what we can do is like let us add more information, like John
strong. He was weak. Okay, now 09th and 12th month 2021, and this is not a suitable date. 20/09/2022. His salary is 30,000 US dollar, and his department is graphic design. Animation. ओके, सो यू हैव एडेड 2 डेटाज हियर. तो यहाँ पे क्या हो सकता है, लाइक यहाँ पे हम चाहे कुछ भी ऐड कर सकते हैं, नंबर ऐड कर सकते हैं, एंड वी कैन ऐड एनीथिंग, देयर इज़ नो एरर इन इट. एंड इस तरह से क्या होता है, आपका डेटा का जो वैलिडेशन है वो ख़राब हो जाता है. लाइक यहाँ पे नेम है तो नेम ही होना चाहिए. यहाँ पे नेम कुछ भी तो नहीं हो सकता, लाइक नंबर तो नहीं हो सकता, किसी का होता है लेकिन ज़्यादातर नहीं होता. मोस्ट कॉमन केसेस लाइक इट्स a text or a string. So we can assign this particular column to get input as a string or text only. No number allowed, nothing, no special character is allowed. So what we can do is we can assign a data validation tool rules, like select that column. To select a whole column, we can click on this arrow button and to select whole column, and you can see some options here: cut, copy, paste, special formats, etc. Insert, you can insert one column to the left, I mean in this side, right to this side. Delete, you can delete this column completely, and clear, you can remove these data. Hide, we can hide the column. Resize, we can resize them, and you can sort C to A to Z. like आपको order by alphabetical order चाहिए तो sort A to Z और Z to A. तो अगर ये सब मतलब sorting में काम आता है. And then conditional formatting, so you can add formatting, conditional formatting, and we have data validation. So these two are useful tools to help you keep like जो data यहाँ पे होना चाहिए वही होगा. फिर आप अगर रूल सेट कर देंगे एंड फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन कॉलम स्टैट्स एंड कन्वर्ट टू पीपल सेव व्यू मोर एक्शंस लाइक etc. So we'll go to conditional formatting first, and we can see what is the condition of we want to assign on this column. So conditional format rules: single color, so the color applied to range इन which मतलब हाउ मेनी रोज़ में हम इस रूल्स को या फिर फॉर्मेट रूल्स को अप्लाई करना चाहते हैं, उससे हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है. ये वन मतलब दिस रो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इज A1. किसी भी सेल का अगर एड्रेस जानना हो तो उसमें क्या होता है, सपोज लेट मी शो यू दैट फर्स्ट. आई विल स्किप दैट, सॉरी. नाउ किसी भी सेल, सी दीज आर cell 1, cell 2, these all are cell. So each box are a cell itself, and we can target any of the cell by their address. So how to get address of a cell, any particular cell? So see here, these are columns as I said, and these are rows. So cell का address शुरू होता है. cell address starts from the column name first. Suppose I am going to get the address of this particular box cell. Okay, so the column name of this cell is H, and the row number is we have 1. So the cell address is H and 1, so it's H1, the address of this cell. So let's say this cell address, we can get the address how? See the D is the column name,
which is first, and the row is 20. So 20 D20 is this cell address. We can see that cell address here also. Whenever you select on any of these cells, like यहाँ पे click करेंगे तो यहाँ पे G19, G is the column name and the row number is the in last. So G first में आएगा, always column name is first and the row name is this last. इस तरह से आप किसी भी सेल को टारगेट कर सकते हैं यहाँ पे सिंपली एंटर करके. लेट्स सपोज मैं किसी भी सेल को टारगेट करता हूँ यहाँ पे सिंपली एंटर करके. ओके, यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ इसे एंड आई एम टारगेटिंग लेट्स से के का जो फर्स्ट सेल है उसे टारगेट करता हूँ. सो के होगा एंड देन 1 एंटर. सी के पे टारगेट हो गया. तो इस तरह से किसी भी सेल को आप टारगेट कर पाएंगे एंड दैट इज़ द सेल एड्रेस इज़ फर्स्ट द column name and then the row number. So here I was showing you the conditional formatting of a column. Conditional formatting is see the applied to range. यहाँ पे A1 का मतलब है A1 का जो सेल है वहाँ से शुरू करके ये 1000 मतलब 1000 नंबर रो जो है उस तक जाएगा. ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगा. सी यहाँ पे सारे रो सिलेक्टेड है. यहाँ पे जितने भी रो आप सिलेक्ट करना चाहेंगे उसका नंबर यहाँ पे एंटर कर सकते हैं. लाइक मुझे 10 चाहिए तो मैं 10 करके एंटर करूँ तो सारे सिलेक्ट नहीं होगा, सिर्फ 10 होगा. ओके, तो लेट्स कीप इट 1000 नाउ. एंड फॉर्मेटिंग रूल्स. व्हाट इज द रूल्स? रूल्स इज दैट फॉर्मेट सेल्स इफ इज नॉट एम्प्टी, इज एम्प्टी. किस तरह के आप रूल्स अप्लाई करना चाहते हैं? सिंगल कलर इज द रूल और द फंक्शन. ओके, ये क्या होगा? अगर फॉर्मेट सेल्स इफ इज नॉट एम्प्टी, अगर ये खाली ना रहे तो ये कलरफुल हो जाएगा. अगर इज एम्प्टी तो ये कलरफुल हो जाएगा खाली पे एंड जो जब आप इंफॉर्मेशन डालेंगे तो ये हट जाएगा. लेट मी टेल यू अगेन. व्हेन यू सेट दिस कंडीशनल टाइप फॉर्मेटिंग लाइक कंडीशन, एक कंडीशन पे कुछ होगा अदरवाइज नहीं होगा. ओके, एक कंडीशन चाहिए इसे. तो कंडीशन किस तरह का हो सकता है? यहाँ पे बहुत सारे लाइक इज एम्प्टी अगर एम्प्टी हो, इज नॉट एम्प्टी अगर एम्प्टी ना हो, टेक्स्ट कंटेंट्स अगर टेक्स्ट हो तो, टेक्स्ट डज नॉट कंटेन अगर टेक्स्ट ना हो तो. इस तरह के बहुत सारे. डेट हो, डेट इज़ बिफोर अगर इस डेट के आगे का डेट इंसर्ट किया हो, इस डेट के बाद का इंसर्ट किया हो. ग्रेटर देन नंबर किसी है, अगर 10,000 से नीचे हो तो लाल हो जाए, 10,000 के बाद हो तो और कुछ कलर हो जाए. इस तरह के बहुत सारे कंडीशन है यहाँ पे. तो आई एम सिलेक्टिंग इज एम्प्टी. इज एम्प्टी पे क्या होगा? ये कलरफुल रहेगा. और यू कैन सेलेक्ट इज नॉट एम्प्टी तो ये कलरफुल हो जाएगा अगर मतलब जब आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे. तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, नेम है, नेम इज़ द टाइटल ऑफ कोर्स एंड द जॉन इज़ द नेम एंड जॉन स्ट्रॉन्ग इज़ ऑल्सो अनदर नेम. एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो खाली है, सादा है ये, आई मीन वाइट है. तो इस तरह के फॉर्मेट कर दिया मैंने. एंड यू कैन ऑल्सो ऐड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट स्टाइल लाइक बोल्ड कर सकते, इटैलिक एंड बहुत सारे और भी है. सो दिस इज़ डन. एंड सी यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको दिख रहा है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, बाय डिफ़ॉल्ट ये कलर आ गया. तो यहाँ पे इसे चेंज भी कर सकते हैं फिल कलर से जाके, जहाँ जो भी कलर आपको चाहिए. लाइक ब्लैक चाहिए तो ब्लैक कर सकते हैं इस तरह से. एंड वी कैन ऐड अदर कलर लाइक दिस टाइप ऑफ कलर एंड देन डन. तो ये कंडीशनल फॉर्मेट हो गया जब तक यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है. लेट्स सो लेट मी शो यू द एग्जांपल. लाइक यहाँ पे एंटर करता हूँ कुछ, ये कलरफुल हो जाएगा. एंटरिंग डेटा, सी कलर आ गया इसमें. तो ये डेटा डाल दिया. कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है? सेल इज़ नॉट एम्प्टी. सेल जब एम्प्टी नहीं रहेगा तो कलर हो जाएगा. ओके, तो इस तरह से आप रूल्स ऐड कर सकते हैं किसी भी सेल में. ऑलराइट, नाउ लेट मी शो यू दैट अदर पार्ट that is conditional, sorry, data validation. So name, and I want to enter name only, the text type data only on this particular column. So we can set a data validation rule here. See, when you go to that data validation part, you can go from this button and also from formatting also. No,
जब आप यहाँ से जाएंगे दिस रिबन से तो डेटा पे मिलेगा आपको डेटा एंड देन डेटा वैलिडेशन. Otherwise just click here and go to data validation and see here a complex user interface like cell range, up to which range of cells you want to apply the data validation rules on. मतलब आप कितने रोज पे उस वैलिडेशन रूल्स जो आप सेट करने वाले हैं उसे अप्लाई करना चाहते हैं सिलेक्ट करेंगे यहाँ से. तो ये सारे सेल्स में ऑलरेडी बिकॉज वी हैव 1000 ऑफ सेल्स सॉरी रोज, तो ऑल आर सिलेक्टेड. And criteria, what is the rules or criteria what you want here. We want list from a range, list of items, number, text. What we want text, just a name can be a text in most common cases, so selecting name, sorry text. Contains, does not contain, equals is valid, email is valid, we can skip that parts and enough. So text should be contained in these boxes, okay, on these cells. So we have set up this text criteria. So warning otherwise on invalid data, like अगर यहाँ पे कोई number enter करेगा या फिर कुछ और format, then it will show a warning. Or we can select this option to reject that input, like number add करेगा तो reject हो जाएगा, enter ही नहीं होगा. तो show warning, मैं warning दिखाऊंगा अगर कुछ गलत data डाले तो data type. And appearance, so in validation help text we can add a text like this field or cell text only, and we can show this whenever someone will enter a number, then they will receive this help message. Okay, now save कर सकते हैं इस तरह से. Okay, it can be anything. Does not contain, contains, equals to anything. तो यहाँ पे कुछ ईमेल के लिए ज़्यादातर इम्पोर्टेंट होता है टेक्स्ट, तो यूज़ होता ही रहता है. सो क्या सिलेक्ट किया जाए, नेम एंड टिक बॉक्स, कस्टम फॉर्मूला, लिस्ट ऑफ आइटम्स. टेक्स्ट के लिए ज़्यादातर यूज़ नहीं होता. does not contain, इस तरह के फॉर्मेट जो एंटर ना करे कोई. सो वी वांट the data inserted to enter a valid text. It can be a name of John Wick or meme, anything it can be. Save. Alright, so we have saved the data validation rule. Now I am going to show you the result. See, I am entering 1 2 3 4. इस तरह के नंबर एंटर हो जाएगा क्योंकि ये टेक्स्ट है एक टाइप का. एंड जो हमने रूल्स एंटर किया था, सेट किया था डेटा वैलिडेशन रूल, जो ये सब चीज़ें हैं जो उसे रिमूव कर देता है, उससे नहीं लेता. सपोज वी हैव हैश टैग एंड डायरेक्ट साइन एंड देन ए डॉलर साइन. तो इस तरह की कुछ चीज़ें एंटर करके देखते हैं ऑन दिस सेल, लाइक हैश इज एंटर्ड. ओके, सो हमने गलत चूज़ किया था वहाँ पे ऑप्शन. व्हेन यू सिलेक्ट दैट ऑप्शन कंटेन्स, जब कंटेन्स इस तरह का होगा जो आई मीन डेटा, तब वार्निंग से होगा. डज नॉट कंटेन करेंगे तो इसे हटा देगा. तो कंटेन्स व्हेनेवर दिस टाइप ऑफ डेटाज आर इनपुटेड देन शो द एरर. सी हियर इन द कॉर्नर, यहाँ पे इनवैलिड लिखा रहे, कॉर्नर पे माउस ले जाएंगे तो यहाँ पे और भी है इस तरह का. ओहो सॉरी. तो ये टेक्स्ट में ज़्यादातर यूज़ नहीं होता. लेट मी शो यू विद ईमेल. ओके, डेटा वैलिडेशन एंड देन रिमूव दिस, रिमूव वैलिडेशन, इस तरह से रिमूव्ड. ओके, सो वी हैव ईमेल हेयर, यहाँ पे ईमेल है. ओके, नाउ आई वांट टू सेट these columns with a data validation rule, and it is text and contains a valid email, reject input or show warning.
and enter a valid email and save. ऑलराइट नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ नॉट ए वैलिड ईमेल। यहाँ पे ऑलरेडी जो डाला हुआ है इसमें एक इनवैलिड का एरर आ रहा है, इनपुट मस्ट बी ए वैलिड ईमेल एड्रेस। let's enter something else, 1 2 3 4 5 6. See again error message is appeared here because this particular column only takes email address। अगर हम यहाँ पे email डालेंगे तो error नहीं आएगा, no error, and I'm entering name md name Akhtar, error। see, तो इस तरह से हम डेटा वैलिडेशन रूल अप्लाई करके कुछ जो हमारा डिज़ायर्ड डेटा है जो हमें चाहिए वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ताकि जब एंटर करें तब एरर आ जाए, कुछ गलत एंटर ना हो, कुछ जो डिज़ायर्ड डेटा हमें चाहिए वही एंटर हो। इस तरह से हम रूल अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन डू मैनी मोर थिंग्स फ्रॉम कंडीशनल फॉर्मेटिंग। लाइक इफ़ मैंने जैसा बताया, लाइक 35,000 के ऊपर हो तो लाल हो जाए, या फिर 30 के नीचे हो तो और कुछ कलर, इस एट्सेट्रा। इस तरह से रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। इसे यू कैन कस्टमाइज इट एज यू वांट। ओके, एंड शेयरिंग जो चीज़ें हैं, लाइक शेयर करना हो किसी के साथ, तो सेम एज गूगल डॉक्स एंड पब्लिश टू वेब ऑल्सो। ऑल राइट, नाउ I can show some more details like checkbox. So let us increase another column, merging this to format, merge cell all, and after salary add. What is the status of salary? Is it paid or pending? So we can do a custom checkbox. We can add, go to that column, select, and then data validation or conditional formatting data validation, and we want to add a tick box. We can also define any column as date, number। तो नंबर से इस तरह से बिटवीन किस नंबर, कितने मतलब लिमिट में नंबर एंटर करवाना चाहते हैं। लाइक ये तो हो सकता है, लाइक अगर किसी पर्टिकुलर रेंज में नंबर ऐड करना हो, 100 से शुरू होता है 1000 तक ही एंटर कर पाएगा। इस तरह के आप रेंज ऐड कर सकते हैं नंबर में, एंड नॉट बिटवीन, लेस देन, इक्वल टू, एटसेट्रा रूल्स और कैन बी अप्लाइड। चेक बॉक्स, यूज कस्टम सेल वैल्यूज, नो, कीप इट अनटिक। show warning, reject input, directly reject, and enter true or false, enter, okay, save and see। ते टिक बॉक्सेस आगे सारे रेंज, जितने रेंज ऑफ सेल्स हमने सिलेक्ट किया था सारे में आगे। एंड वी कैन कीप ए ट्रैक ऑफ रिकॉर्ड्स लाइक सैलरी पेड और नॉट पेड। इफ इट्स पेड वी कैन जस्ट क्लिक हियर टू मेक इट टिक। ओके, तो इस तरह से हम इसमें टिक बॉक्स ऐड कर सकते हैं। एंड जो मैंने नंबर दिखाया था, लेट्स ऐड अनदर सेल।
Okay, is a valid date is the enter data, it will check the enter data, is it a valid date or not. तो हमें चाहिए वैलिड डेट है या नहीं चेक करना एंड रिजेक्ट. Alright, now you can enter a date. The benefits of assigning a data validation rule on any of these columns is that जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको डेट का लाइक मैंने यहाँ पे डेट का जो वैलिडेशन रूल अप्लाई किया तो डेट आ रहा है इस तरह से. यहाँ पे अगर कुछ और था लाइक ईमेल, तो ईमेल पे आपको ईमेल ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ सजेशन के लिए नहीं है. लाइक जब आप डेट पे करेंगे तो डेट का ऑप्शन आ जाएगा इस तरह से. सो आई कैन जस्ट क्लिक एंड डेट इज इंसर्टेड. तो हम टाइप भी कर सकते हैं. तो इसका कुछ अमेरिकन स्टाइल है, लाइक पहले ईयर होता है, फिर मंथ होता है, फिर डेट होता है, डे होता है. सो लेट अस एंटर ईयर and then enter the month and then 21. तो इस तरह से भी एंटर कर पाएंगे एंड इट इज़ अ वैलिड डेट. इफ़ आई एंटर एनीथिंग एल्स लाइक मीन तो यहाँ पे एरर आ जाएगा. सी देयर वाज अ प्रॉब्लम, द डेटा दैट यू एंटर्ड इन सेल द सेल एड्रेस वायलेट्स द डेटा वैलिडेशन रूल्स सेट ऑन दिस सेल. ओके, ऑलराइट. तो इस तरह से आप इसमें रूल्स अप्लाई कर पाएंगे. And all of these things like sharing and moving, editing, copy paste etc are same. Grouping, किसी particular range of data को आप group कर सकते हैं. Freeze same, like हमें इसे freeze करना हो तो freeze हो जाएगा. Someone entered lookup and lookup भी होता है. What are these things? I don't know. एंड वी हैव फॉन्ट, ये जो कस्टमाइज लाइक फॉर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की चीज़ें हैं. मर्ज सेल दिखाया जो सेम टू गूगल डॉक्स जहाँ पे हम टेबल्स को मर्ज कर रहे थे. यहाँ पे तो ये पूरा टेबल्स ही है एक तरफ का. एंड डेटा में ये सब जो बड़े बड़े जो काम करते हैं, मतलब यहाँ पे इसके मदद से उसे काम आएगा लाइक फंक्शंस एंड randomize range, named ranges, protect seats. How to protect from unauthorized changes. I want to change this heading part to be unchanged, like इसे change नहीं होना चाहिए. Selecting all of the cells and area and then data, protect seats and ranges, and we can enter a description why we are protecting it. It's the metadata or heading metadata. This goal set and should not be changed. Alright, how many cells we have selected this, but यहाँ पे कुछ लिखा आ रहा है like A1 selected to I3 तक. No, not this is not the correct address. So we want to select A1 and what is the address of this okay I3 है. तो हमने सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे ऑलरेडी आ गया. अगर सिलेक्ट ना करते तो मैनुअली इनपुट करना पड़ता है. So as we have selected A1, this is A1 and this is I3. यहाँ पे दो सेल्स से ऑलरेडी, सॉरी दो रोज, इसलिए I3 आया है, नहीं तो I2 आता. तो सिलेक्टेड ऑलरेडी एंड सेट परमिशन and restrict who can edit this range, like only you or custom. So only you, सिर्फ मैं ही चेंज कर सकता हूँ, like the owner, admin of the file, and done. Changes are saved. Alright, so now nobody can make changes into this particular section. Okay, if I share this file with someone with the edit access, even though they have edit access, they can't make changes in this section. लेकिन मैं जो ओनर हूँ मैं चेंज कर सकता हूँ. ऑलराइट, तो इस तरह से आप सेल को प्रोटेक्ट कर पाएंगे. एंड यू कैन ऐड मल्टीपल सीट्स, लाइक ये एक पेज हो गया एंड वी हैव मोर एम्प्लॉय. वी कैन ऐड ए सीट बाय क्लिकिंग हियर एंड देन वी कैन नेम seat 1. This is seat 1. You can rename it by right clicking on it and rename to employee. Done.
and you can let's copy paste some details. How to copy? Select any of the information, any of the cells. ये पूरा रोज मैंने सिलेक्ट कर दिया एंड आई एम पेस्टिंग हियर इस लाइन पे, तो इस तरह से पेस्ट कर पाएंगे. यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल रोज इस तरह से एंड कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी. सिलेक्ट मोर इस तरह से एंड राइट क्लिक ऑन देम, कॉपी. इस तरह से राइट क्लिक से भी पेस्ट होगा. So we have more data now. Now employees here, and we can add another sheets. We can make this for directors. Format, merge all cells and keep the text on the center, and then directors of the company. Font size to be 36. Okay, keep it 24, and the background color to be yellow, and add a subheading or title with a background color of blue or dark, and font color is white, and name, phone number, email, address, GOG, salary, department, designation. So we have first first person as a CEO, Aryan, phone number is something, email can be anything, and date of joining is 22/08/2022, and salary is $35. Designation is CEO and founder. Okay, so we have data here. Now I want to assign each of the directors with an ID, a unique ID other than name. Like ये ज़्यादातर एम्प्लॉय में अप्लाई हो सकते हैं या फिर कस्टमर्स या क्लाइंट्स पे हो सकते हैं, बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन ऐड a unique ID to each of our directors. Aryan Reza, like two person can have same name, like दो लोग का एक नेम हो सकता है, एक एड्रेस भी हो सकता है, तो उसमें हम यूनिक आईडी या फिर कुछ कोड असाइन कर सकते हैं ताकि हम उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए. सो लेट अस वी हैव लाइक हमारे पास यहाँ पे कुछ जगह नहीं बचा, यहाँ पे ए से शुरू किया है हमने, ए कॉलम से. वी कैन ऐड ए a column left to this column. So how to do that is click here and insert column to the left to insert, or you can just right click here on this column and insert row above, insert column to the left. To insert a row you can click here, or column to click here. I clicked on left, so left में एक बन गया है column. Now we can add ID and merge them. Okay, format, merge cells. Alright, now ID can be anything, like suppose it's a company name, it's something and which is start from IMD, and the ID can be 001. Okay, so we have 001 whose name is Aryan, and then number etc details. Okay, now we can do is like ये ID होता है, like जो roll number होता है वो similar होता है, like 1 2 3 4 etc. तो हम उसे fill handle, see this, इस तरह से यहाँ पे एक आपको
एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा, बॉक्स सॉरी स्क्वायर, तो उसके मदद से आप इसे पूरा जो रोज है उसे फिल कर पाएंगे। लेट मी शो यू। इस तरह से सिलेक्टेड सेल्स आर नाउ फिल्ड विथ 1 2 3 4, इस तरह से फिल हो गया। तो सेल्स में या फिर एक्सेल में भी इस तरह का होता है। या फिर आप यहाँ पे कुछ मंथ ऐड करेंगे, लाइक एक लेट्स टेक another table column, it's a month, and starting from January we can easily get the February March April by doing this. तो यहाँ पे नहीं हो रहा है because we have to apply rules, or maybe that is a month or something else. तो इस तरह से आप easily fill handle से simply January February March 1 2 3 4 इस तरह का जो नंबरिंग थिंग्स है वो आपको मिल जाएगा। वो नंबर आप 1 से शुरू कर सकते हैं इस तरह से, या फिर 0 0 1 से भी कर सकते हैं इस तरह से। तो 0 का वैल्यू कुछ नहीं हो तो ऑटोमेटिक ये ले लेता है 1। so in such cases we can do is we can add the text or we can apply rules also, custom rules। तो text ऐड किया मैंने बस, text and 0001 sorry 1, तो हमें दिखेगा। अब इसे फिल करते हैं इस तरह से 1 2 3 4 2 13 14 एंड ऑटोमेटिक इंक्रीज होता रहेगा 1 by 1 इटरेशन विल कंटिन्यू अप टू एज मच एज यू नीड। इस तरह से सिलेक्टेड सेल्स विल बी entered like increase। okay, so let's remove them again and fill, enter name, okay, can add number पे भी होगा वो fill handle, we can increase them 1 by 1 and now you can see। तो ये यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ शायद किसी वजह से, बिकॉज मतलब इसे शायद टेक्स्ट ले लिया होगा इसने। तो वी कैन डू इज लाइक हमें इसे कस्टम ऐड करते हैं 99999। ओके, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना हो इस तरह से आप कर सकते हैं फिल हैंडल से। सेम टेक्स्ट ऐड करने बार बार, तो इस तरह से पूरा फिल हो जाएगा। all right, what is left now? Link, same as Google Docs, we can link this email address to mail to that email and applied। इस तरह से लिंक कर सकते हैं and whenever someone will click on this it will take him to the email। alright, I don't think now anything is left। VLOOKUP, what is VLOOKUP? Can you say me? Use HLOOKUP when your comparison values are located in a row across the top of a table of data and you want to look down a specific number of rows। So HLOOKUP is a horizontal rows। Use VLOOKUP when your comparison values are located in a column horizontal, and this for vertical। yes, maybe there you can check। lookup create filters functions, lookup
Yes, VLOOKUP and HLOOKUPs are also here. Right, any question from the things I showed you? Just clear them, selecting and backspace, or you can click on the delete button, और आप यहाँ से राइट क्लिक करके भी डिलीट कर पाएंगे. Delete rows or clear cell. What is the clear cell? So we have to use the delete button to remove the data. Any question?